who's none other than just a second, ladies and gentlemen. And now I would like to welcome one of the very, very special guests जो यहाँ पे आए हैं और सर का नाम लखनऊ में तो मेरे ख्याल से सभी को पता है ही इज़ A.V. अनंत राम डायरेक्टर ओमान इंडिया श्रीलंका लुलु ग्रुप इंटरनेशनल। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। इट्स एन ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस टू हैव यू हियर सर। और इसके बाद मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर धीरज कपूर, वाइस प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेशंस फ्लिपकार्ट ग्रुप। एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें। ही इज द पायनियर इन डिजिटल आईडी एंड सोशल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स एंड हैज प्लेड अ लीडरशिप रोल इन मेनी implementations. It's an honor to have you here, sir. All right. And now, ladies and gentlemen, I would like to welcome our moderator for today's session. हमारे session के moderator, Partner Africa India Middle East AIM Consulting, Ernst and Young. We have Mr. Shobhit Mathur. We have one more guest जिनको मैं आमंत्रित करना चाहूँगी. We have Shri Thampe Koshi ji, MD CEO ONDC Open Networking for Digital and Commerce. एक बार जोरदार तालियां बजाएं सर के लिए. Everyone, welcome sir. It's an honor to have you over here. And now, ladies and gentlemen, I would like to welcome our moderator for the afternoon, Mr. Shobhit Mathur, Partner Africa, India, Middle East. Let's have a huge round of applause for sir, and over to you, sir. हमारे जो अगले गेस्ट हैं उनका भी मैं वेलकम करना चाहूँगी और हमारे जो अगले गेस्ट हैं वो भी आ चुके हैं। श्री अमित मोहन प्रसाद, IAS एडिशनल चीफ सेक्रेटरी MSME उत्तर प्रदेश। जोरदार तालियों के साथ सर का स्वागत करें ऑन स्टेज। ओवर टू यू शोभित जी। थैंक यू सो मच। आदरणीय श्री राकेश सचान जी, मंच पे बैठे और सभी dignitaries, it's a pleasure for me to have this opportunity to moderate a panel like this and also talk briefly about ODOP, which has become a name synonymous to how a state government can actually make a difference at the grassroots level. If we talk about the government of Uttar Pradesh and the focus that it has given to traditional industries, it is unmatched. If we see the impact that it has driven at the grassroots level by way of a flagship program called One District, One Product, it is unmatched. It is not only creating benchmarks within India, but clearly globally also. Uttar Pradesh is genuinely becoming the MSME capital of the country. We see that under this program, a lot of success stories. We'll talk about that. There is a short video that will enlighten us more. During the panel, we'll also talk about some of the schemes, some of the guidelines, some of the benefits that MSMEs get under this program. We'll also get to hear from Honorable Minister his vision and where his directions on where the next phase of this program can be. Without taking much time, I'll request for the video and the short video on the program, which will give us a journey of the program as well as talk about some of the success stories.
Pradesh, where art is entrenched in every district. The state has centuries-old legacy of art, but in the last few years, these art forms have got a new lease of life. And all this has become possible due to the multifaceted program named One District, One Product, also called ODOP program. The program was launched by the Uttar Pradesh Government in January 2018. The aim of this far-sighted program is to give new lease of life to the traditional handicrafts and also to the ODOP entrepreneurs aligned with them in every district. The products made in districts are now available in global markets. Facilities like easy access to credit, skill enhancement, and free advanced toolkits, packaging, and online market support is being provided with encouraging results. In fact, a complete transformation. Under the program, credit worth more than rupees 2,000 crore was made available to the ODOP entrepreneurs of the state in the last 5 years. As a result, more than 1,30,000 new people got employment. Besides, a total of more than 83,000 ODOP entrepreneurs have been provided free skill development training, and more than 58,000 ODOP entrepreneurs have been provided with free advanced toolkits. The quality and packaging of ODOP products have been improved so that local products are globally competitive. In the year 2017, the export of the state was rupees 88,000 crore. Today, it has increased to more than 1,56,000 crore, in which about 80% contribution is from ODOP products. To address the infrastructure gaps, 28 common facility centers have been sanctioned to address the common gaps like testing labs, raw material banks, and processing centers. Starting from Uttar Pradesh, today, this program is being adopted throughout the country and is generating employment. This is a unique example of vocal for local and local to global. हुनर से भरा है यूपी, ODOP, ODOP, ODOP. Every product has a story. ODOP turns it into a success story. Under the program, 62 unique products were identified across 75 districts. All the interventions were very focused towards how we plug all the requirements for making those products reach global standards, and we can see the difference it has made. 1,53,000 crores worth of export is no mean feat. To take us through the journey of ODOP in a little bit more detail, I'll request Mr. Mayur Maheshwari, Commissioner and Director Industries, Government of Uttar Pradesh, to come and explain to us what are the different benefits and the journey of ODOP. Sir. Respected Honorable Minister for MSME, Khadi and Village Industries, Handloom and Textile, Government of Uttar Pradesh, Shri Rakesh Sachan ji, Additional Chief Secretary Shri Amit Mohan Prasad ji, leading lights of the industry, Shri Mushtaq Mohammed ji of Mustafa Mal from Singapore. I just narrate a story. We had visited Singapore. There I requested Mushtaq ji to become a partner in the ODOP journey. He was very kind enough to join us here and become a partner in the UP's growth story. This is an indication of how well we are progressing, the global recognition that the state is gaining, and I'm very happy that he is here amongst us to become and include our ODOP products into all the malls that he is having, and probably this is just the beginning and we'll have a lot more to engage with these companies abroad. I also thank and welcome Shri Dheeraj Kapoor ji here, Shri Anant Ram ji, Director Lulu Group, who is already has a significant presence in UP and in Lucknow particularly. And now, as all of you know, this ODOP program
has a very important place in each one of our hearts. It is not only a product, it is not only a scheme, but it is a journey. As I'll show you through the presentation that how we all joined hands together, the industry, the academia, the professional partners, and then the journey began, and now ODOP has become a household name in each one of us, each one of our homes today. The program was officially launched in January 2018 on UP Day in Lucknow, and since then the journey to ODOP has taken a very, very big shape. It now spans in 62 products of all 75 districts of the state, and each of these products has a unique journey and a unique story to tell. As you can see, this is history blended with modernity. Kannauj perfume cluster, the Gorakhpur terracotta cluster, Muradabad metal craft, Banarasi saris, these are all thousands of years old products which have now taken shape into a form of an ecosystem which with the help of government support, and this is now becoming global as well. So when we began this, when the government began this program, there were many policy issues, there were many gaps that the traditional artisans, weavers and the craftsmen were facing. Majority of them started with access to credit and hand-holding them at the last mile to provide them easy money. So we launched these four, I would say, assistance in the form of margin money schemes, in the form of market development assistance, and to substantiate their products to help them reach maximum value addition, we provided them with toolkits. These were toolkits for 62 different products of the 75 districts, so which were enhancing the value of each product. And to support them, we developed common facility centers which have a common testing, tracing, diagnosing, treating facilities for each of these products in all districts. जिससे कि ये हुआ कि जिस सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सभी लोगों को एक कॉमन सुविधा एक ही छत के नीचे मिली, प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, तो लोगों ने उसका यूज़ किया और अपने प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। अभी तक जैसा आपने फिल्म में भी देखा 2000 करोड़ से ज़्यादा के मार्जिन मनी के हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हमने क्रेडिट लिंकेजेस इस्टेब्लिश की हैं, और बाकी हमारे अभी ONDC के CMD साहब भी हैं, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, उनके साथ भी हमारा पार्टनरशिप है, एंगेजमेंट है। तो वो सारी चीज़ें एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो मिसिंग होती है किसी भी स्मॉल एंटरप्रेन्योर को ग्लोबल बनाने के लिए, वो हम इन स्कीम्स के, इन असिस्टेंस के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्तमान में अभी हमारे 7 CFCs ऑपरेशनल हैं, 21 इम्प्लीमेंटेशन में हैं और 11 विभिन्न प्रक्रियाओं में हैं जो जल्दी ही ऑपरेशनल हो जाएंगे। और इन सभी ये करीब 21 ज़िलों में हम लोगों ने ये CFCs देने का काम करा है, और जल्दी ही इन 21 ज़िलों के माध्यम से हम आप तक पहुंचेंगे, मार्केट तक पहुंचेंगे। इन सभी प्रोडक्ट्स में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप जानते होंगे कि जैसे हम देखते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, उसकी क्वालिटी बेंचमार्किंग क्या है। लोग कहते थे कि कोई भी प्रोडक्ट लो तो पहले देखना ISI मार्क है कि नहीं। तो उसी तरीके से क्वालिटी काउंसिल के साथ हम लोगों ने एक MOU किया। क्वालिटी काउंसिल ने स्टैंडर्डाइजेशन के लिए प्रोडक्ट्स के साथ हर प्रोडक्ट पे हम लोगों ने चिन्हीकरण करके उनके साथ हमने कहा कि हमारे प्रोडक्ट्स को भी आप सर्टिफाई करिए, जिससे कि इनकी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़े। नाउ मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूँगा, दोनों ऑडियंस हैं यहाँ पे। As you all know that designing is also a very important component. So we have to cater to the design requirements, because unless a product is designed to the specific needs, उसकी last mile connectivity अच्छी नहीं होगी और last mile value addition नहीं हो पाता है। इसीलिए हमने MSME clusters को transform करने के लिए design labs बनाए। NIFT रायबरेली आप देख रहे हैं, पार्टनरशिप करी। UP इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एक हमारा इंस्टीट्यूट है जिसने बहुत अच्छा काम किया विगत 3 सालों में, विगत 4 सालों में मैं कह सकता हूं कि इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है। हमारी डिज़ाइनिंग टीम के साथ लग के एक एक प्रोडक्ट को लास्ट माइल तक हैंड होल्डिंग की है, ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। तो वो एक हमारा अपना इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशंस भी डेवलप हुए इस प्रोग्राम से,
ना केवल प्रोडक्ट्स डेवलप हुए बट इंस्टीट्यूशंस भी ग्रो हुए. सो दिस इज अ mutually beneficial program which has helped the entire ecosystem of the state to grow. And the last but the most important thing is packaging. हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है, उसके साथ इस पैकेजिंग यूनिट्स का हमने सभी हमारे प्रोडक्ट्स का एक MOU करा, सभी प्रोडक्ट्स की डिज़ाइनिंग करी जिससे कि वो हैंड होल्ड एक कैरी बैग में ले जाएं, वो पैकेजिंग अट्रैक्टिव हो और जो शेल्फ्स पे हम रखें प्रोडक्ट्स तब दिखे उनको. एंटायर डिस्प्ले enhances the value of the product. So we have tried to make it very robust, very handy and very effective so that the value addition is maximized. और उस सब के बाद जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हम सभी लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट रहती है, सब लोग को मार्गदर्शन रहता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें. माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ पे बहुत जोर देते हैं कि बिना तकनीक के हम लोग लास्ट माइल तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो हमने एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म बनाया, सारे प्रोडक्ट्स को हमने ODOP मार्ट पे डिस्प्ले किया और हमारे टेक्नोलॉजी पार्टनर्स भी हैं हमारे साथ, फ्लिपकार्ट हैं, अमेज़ॉन हैं. उन लोगों ने भी अनाउंसमेंट्स किए हैं कि वो एक माइक्रो साइट बनाएंगे, हमारे प्रोडक्ट्स को अपने ODOP UP आप डालेंगे तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट्स पे आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे. सो दिस इज़ अ वेरी बिग इनिशिएटिव फॉर द लोकल हैंडीक्राफ्ट वीवर्स, क्राफ्ट्समैन जो कि ग्लोबल स्टेज तक लास्ट माइल तक पहुंच सकते हैं. इसके साथ ही स्किल एनहांसमेंट भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है. तो जो हमारे काशी के चाहे गुलाबी मीनाकारी का काम हो, बांदा का शजर स्टोन का काम हो या फिरोज़ाबाद का ग्लास वर्क हो, उन सब में हमने स्किलिंग भी डिज़ाइन किया है. CFCs में उन स्किल सेंटर्स के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली वी आर सीइंग दैट द प्रोडक्ट बिकम्स ऑफ हाई वैल्यू एंड विच हैज़ लो इनपुट कॉस्ट. तो ये दोनों काम हम लोग को बहुत ज़रूरी हैं, तभी एक प्रोडक्ट की, हर प्रोडक्ट की एक सक्सेस स्टोरी बनाना बहुत ज़रूरी है. मार्केटिंग ब्रांडिंग में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने ट्रेडिशनल फेयर्स के माध्यम से, इंटरनेशनल फेयर्स के माध्यम से और इस स्टेज का भी, अपॉर्चुनिटी का भी हम लोगों ने यूज़ किया. आप सभी लोग हमारा ODOP का स्टॉल ज़रूर विज़िट करें. हॉल नंबर 2 में हमारा स्टॉल है जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स हम लोगों ने दिखाए हैं. वहाँ पे आप देखिएगा कितनी मेहनत से लोगों ने जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो हमने दर्शाए हैं. आप लोग विज़िट ज़रूर करिएगा, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे. और इन सब का परिणाम क्या हुआ? द इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज इंटरवेंशंस, यू कैन सी देयर इज़ अ फिनोमिनल ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट्स which have increased from 88,000 crores in 2017-18 to 1.56 lakh crores in 21-22. और अब इस फाइनेंशियल ईयर में ये फिगर और भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है. आप जानते हैं कि 80% से ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन हमारे MSME यूनिट्स का होता है और उन MSME यूनिट्स में इन ODOP प्रोडक्ट्स का होता है. तो एक बहुत ही उत्साहजनक परिणाम है ये, सारी मेहनत का, आप लोग के सहयोग का और हमारे टीम का, जिन्होंने लग के हमारे मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये कार्य किया है, मुख्यमंत्री जी के निर्देश में. तो एक ये प्रोडक्ट हर घर में पहुंच चुका है और बड़ी खुशी हो रही है मुझे ये बताते हुए कि जितने भी हमारे इंटरवेंशंस आए उन सब में लोगों में हम लोग 21 विभिन्न देशों में गए थे, हमारे डेलीगेशंस ने विज़िट किया था. सब जगह ODOP के लिए एक बहुत ट्रिमेंडस रिस्पांस था और आज ये फुल हाउस भी रिफ्लेक्ट करता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट प्रोग्राम बन चुका है. इस स्लाइड से आपको जो माइलस्टोन्स हमने अचीव किए हैं वो सामने दिखते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, 21 CFCs are under implementation. 83,000 ODOP artisans have been benefited. Projects of more than 2,000 crores have been financed. 20 ODOP products have been awarded a GI tag. And we have participated in more than 300 promotional events. And finally, to reach to the last mile, ODOP Mart has become a very
important online marketplace with the help of our technology and marketing partners like Flipkart and Amazon. And also now we are onboarding, we will be with the first state to launch and onboard with ONDC, the Open Network for Digital Commerce, which will provide the platform for each one of us, for each one of your success stories to reach the world. Today, when Honorable Minister Shri Smriti Irani ji would be coming, हम लोग success stories का एक compendium launch कराएंगे. ये ऐसी success stories हैं जिन लोगों को अभी तक recognition नहीं मिला था. हर ज़िले की ऐसी हुनर जो हम लोग ग्लोबली हर राज्य तक, देश तक, विदेश तक पहुंचाना चाहते हैं, उनकी दक्षता का, उसको हम लोग माननीय मंत्री जी के माध्यम से अभी लॉन्च कराएंगे. आप सबके सामने इन सबकी सक्सेस स्टोरीज आएंगी. आप लोग भी मोटिवेट हों और लोगों को इसके ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ये हमारा एक प्रयास रहेगा. और अब हमारा टारगेट है कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को डबल करें, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन के लिए हम आगे बढ़ें और जो भी की गैप्स हैं उनको हम एड्रेस करें. आज इस सेशन में जो हमारे पार्टनर्स हैं ONDC, आई एम थैंकफुल टू देम दैट दे हैव acknowledged the presence of our ODOP and have gracefully ensured us that they'll support creation and promotion of large buyer-seller digital platform to support MSMEs of UP, not only ODOP products, with their outreach to 150 towns and cities across India. Flipkart ने नए fulfillment centers का announcement किया है, which I think they will talk about in a detail. Lulu Group ने अभी ये भी हम लोगों से कहा है कि सभी अपने ODOP प्रोडक्ट्स को हमारे सभी हाइपर मार्केट्स में, बिजनेस नेटवर्क्स में, 245 हाइपर मार्केट्स वर्ल्ड ओवर हैं, वहाँ पे जाएंगे. खासकर इजिप्ट, इंडोनेशिया, गल्फ कंट्रीज़, मलेशिया और इंडिया में तो जाएंगे ही. और मुस्तफ़ा ग्रुप से मुश्ताक साहब ने भी अनाउंसमेंट्स किया है कि वो भी बहुत कीन हैं. दे विल बी कीन टू इन्वेस्ट एंड बिकम ए पार्टनर इन आवर ODOP स्टोरी. सो आई I'm very thankful to each one of you for coming here. और अंत में केवल यही कहूँगा, each one should own one. ODOP का एक प्रोडक्ट हर एक के पास हमेशा के लिए. Thank you. Thank you so much, sir. It's truly remarkable. और ये दर्शाता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके लिए आर्टिजन्स जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कितनी अहमियत है. सर, यू मेंशन्ड अ ग्रेट पॉइंट अराउंड हाउ यू ब्लेंड ट्रेडिशन विद मॉडर्न वर्ल्ड, एंड आई थिंक दैट हैज़ बीन द की ड्राइवर ऑफ दिस फिनोमिनल ग्रोथ दैट वी आर सीइंग. Another big achievement of ODOP program has been enhanced access to market. In today's world, e-commerce plays a huge role in the way our small artisans, our small enterprises can reach the world. Under this, the whole improving access to e-commerce, ONDC, the Open Network for Digital Commerce, is one of the flagship programs which have been anchored by Government of India. It is not about setting up of another e-commerce platform, but it is about empowering the MSMEs, both the buyers as well as sellers, to get access to a more equitable platform. I would request Shri Thampi Koshi, who is the MD and CEO of ONDC, to come and enlighten us on this new initiative, which is again set to create a new benchmark across the world. Sir. Respected Minister, other dignitaries on and off the dais, ladies and gentlemen. It's truly exciting for me to be here today to address this August gathering at UP. This is stated as the MSME capital of India. Some of you might have heard of ONDC because it's a very new initiative by the Government of India in line with the vision of the Honorable Prime Minister and the Cabinet of making vocal for local, and also, and most importantly, making
digital commerce a democratic place. As you are aware that e-commerce is something really growing everywhere in the world. All of us here sitting may be users, but today, while there is a lot of penetration of that in the urban India or even the elite class of India, the total presence is, the penetration is only about 5 to 6% when it comes to the buyer side and about 1% when it comes to seller side. It is a place which today, everywhere in the world, is dominated by some of the very successful and exciting organizations which has done a fantastic job in e-commerce, but they are walled gardens. When you mean by walled gardens, it has their own rules and conditions for participation as a buyer and seller. If you are a buyer in one platform, you can only see the sellers in that platform. And if you are a seller in one platform, you are visible only to the buyers in that platform. And if you are a seller, you want to be visible to the buyers in both the platforms, you have to establish systems and processes and procedure in both of them. That's why the idea of democratization of commerce has been envisaged by the Ministry of Commerce. What it means is that if any big or small enterprises become a part of any platform or a software or an application which is ONDC protocol compliant, it is visible to the total country. 1 billion buyers who will come to this market using a variety of buyer application given by fintech companies like PhonePe and Paytm, given by banks like SBI, IDFC, Kotak, ICICI, done by telcos like Airtel and Vodafone, all of them. So we are talking about a uniform market of 1 billion people. And not just in India, and it would be visible anywhere in the world. So that's why this unique idea, which has been first time implemented here in India, now is getting a lot of attention globally. I'm sure some of you have heard it, some of you are just getting familiar of this because it's an initiative by the government few months old. But within this few months, it is good to see that we have been able to really get traction. And it is already present in our beta testing and in our alpha testing in about 150 cities and growing on a day-to-day basis. And we believe that by the time next year when we come to the GIS, we would be seeing a complete maybe 50x multiplication of this, idea of open commerce. I'm sure you would have heard all experience what India achieved 6 years ago when we introduced UPI. Everybody used to wonder what the hell is this UPI. We already have, wallets. We already have online transaction. We already have cards. But all of us together, all districts together, could only handle 250 million transactions in a month. But when we introduce an open network like UPI, it has now in the last 6 years grown to have 7 billion transactions in a month. And I understand that NPCI is now stated to take 1 billion transactions a day. And that is in the money side of any transaction. As you know, in commerce, there are two parts. One is the money, other is the goods. So we are talking about what India has achieved in the money side, which is UPI. And what ONDC has been established as in our country is in the commerce side, which is only a few months ago. In UPI, it's only money. Here, you're going to talk about all products and services. So I am sure that this is going to become a truly remarkable achievement, specifically giving support for small and medium, small and micro enterprises. We already have of them areas, merchants we have already launched. More than 25% of them have never been in digital commerce. And if it is really exciting to know that ODOP, Government of India has identified ODOP as a premier program, and we are very happy that UP is one of the first states to have made the presence, and we are expecting that to grow from UP as well as from the other states. And let me just conclude in the limitation of time that all MSME sitting here is going to be benefited by this. We will give you all extent and support, and we want your cooperation. I know that in this 5 minutes you can learn about it. So anybody want to know more about this can send a message to
team@ondc.org. Team@ondc.org, and you will be able to get all the detail. Thank you. Good evening. Thank you so much, Mr. Koshi. Clearly, one of those digital initiatives under the vision of our Honorable Prime Minister, which can clearly change the way India and the rest of the world maybe operates on the e-commerce platform. Continuing with the theme of e-commerce, I would request Mr. Dheeraj Kapoor to come on stage and give us a brief introduction as well as details around how Flipkart is working with ODOP and Government of Uttar Pradesh in enabling our MSMEs. Honorable Minister of MSME, Shri Rakesh Sachan ji, respected Commissioner and Director of Industries, Mr. Mayur Maheshwari, Mr. Amit Mohan ji, a very good afternoon to all esteemed guests present here. It's a pleasure to see you and amongst you in the Global Investor Summit 2023. I would like to extend my warmest congratulations to Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, and his entire government in Uttar Pradesh on the effort towards organizing this summit and living in national and international dignitaries to collectively explore meaningful opportunities and forge the partnership to support the inclusive growth in the state. The state of Uttar Pradesh has been a shining example of the good governance, a vision and the thriving economy. It's exciting to witness the progress made by the heartland of India in significant areas such as skill development, education, healthcare, manufacturing, IT, logistics and warehousing, and tourism. The government's effort in these areas have been noteworthy in improving the lives and livelihood of people of Uttar Pradesh, but thereby strengthening the MSME sector and encouraging the entrepreneurs in the region. It's an honor for me to represent Flipkart at this stage and discuss the catalytic role of the e-commerce has played in the social economic development of the state and the country. The e-commerce is growing rapidly, has greatly impacted the economy by creating numerous opportunities for livelihood, such as jobs and entrepreneurship. Despite its growth, it still represents a very small portion of overall retail. However, the impact of e-commerce on the ground is significant, as it has opened up new avenues for people to earn the living, whether through employment or starting their own online businesses. E-commerce provides a platform for people to realize their potential and succeed in today's digital age. As e-commerce continues to expand, to hold its great promise and offers limitless opportunities and possibilities for seeking to improve their livelihood. Since last 15 years, Flipkart has been helping and driving the growth of India's e-commerce market through technology and innovation, leveraging the deep consumer insight and sustained growth across the categories and strategic investment in the new avenues. Flipkart has nuanced understanding of its 450 million customer base coming from India. Equipped with experience and expertise, Flipkart continued to boost the entrepreneurship by building an ecosystem of sellers, especially the micro and small sellers across the country. Flipkart sellers continue to grow strongly on the platforms. Seller growth was 220% last year on the platform. The group marketplace have close to about 12 lakh sellers on the platform, a testament to the faith that Indian MSMEs, small businesses and entrepreneurs and enterprises today have Flipkart and Shopsy. They see us as a trusted partner who will collaborate with them to leverage the power of e-commerce to digitalize modernize their business and expand the market reach and improve their revenue. The growth impact of Uttar Pradesh craftsmanship, culture and tradition continues to serve as motivation for several new entrepreneurs to explore the benefits of e-commerce as a part of digital revolution. In line with our commitment to support the state government, one district, one product,
Ek Janpad, Ek Utpad scheme, the Flipkart and the government of Uttar Pradesh signed a MOU in 2020 to bring district-specific products and support the indigenous art and artisans that are unique to the region on the Flipkart marketplace. The product made of leather from Agra, aluminium utensils from Kanpur, chicken curry from Lucknow, wooden lacquerware and toys from Varanasi, terracotta pottery from Gorakhpur, and woodcraft from Saharanpur. Amongst many are available to people across India through our platform. ODOP has done phenomenally well. Can I request the team to please run the video here, please? फ्लिपकार्ट ने मुझे एक बेरोजगार से सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना दिया है। मेरा नाम पीयूष अग्रवाल है, मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे। MBA करने के बाद मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब किया था। कुछ दिन काम करने के बाद मुझे ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि मेरा शुरू से ही था कि मुझे बिज़नेस शुरू करना था अपना। फिर कोविड आ गया, कोविड में लॉकडाउन लग गया, देन पूरी दुनिया ठहर सी गई थी, तो उसके बाद मैं अपने शहर वापस आ गया। फिर मैं सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 2-3 महीने तो लॉकडाउन ही चला था, तो उसके बाद कुछ अर्निंग नहीं हो पा रही थी। उसके बाद जैसे ही अनलॉक हुआ, सभी जो रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, वो उन्होंने रिजॉइन कर लिया था। मेरे पास कुछ काम नहीं था, थोड़ा प्रेशर था, थोड़ी नर्वसनेस थी कि कुछ तो करना है, अर्निंग के लिए कुछ तो करना ही है। मथुरा जैसे कि व्रत क्षेत्र है, तो मथुरा में हम घूम रहे थे। जब मैं मंदिर गया था, तो वहाँ दुकान पर कई लोग अगरबत्ती और धूपस्टिक खरीद रहे थे। फिर वहाँ मैंने ऑब्जर्व किया कि क्यों ना मैं भी इसे स्टार्ट कर सकता हूँ। और यहाँ काफ़ी मंदिर हैं और पूजा पाठ तो चलती ही है, तो जब तक पूजा पाठ चलती रहेगी, धूप स्टिक अगरबत्ती तो बिकेगी ही। फिर इस आइडिया के बाद मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की और कंपनी का नाम मैंने शंक स्टोर रखा। तो फिर मैंने रॉ मटेरियल परचेज़ किया। उसके बाद फिर हम इसको घर पे बनाने लगे। मेरे फादर, मेरी मदर, हम लोग मिलके इसको बनाते थे। अभी मेरी कंपनी में अगरबत्ती, धूप स्टिक एंड धूप कॉर्न बन रही है। और इसने कोविड के पीरियड में बिजनेस को स्टार्ट किया था, जब कोविड से पूरी दुनिया त्रस्त थी। मुझे इसकी कारगुजारी पर नाज है। इनको लोकल मार्केट में 2-3 महीने मैंने बेचने के बाद मुझे लगा कि मुझे इसको एक्सपेंड करना चाहिए अपने बिज़नेस को। जैसे कि कोविड के बाद ऑनलाइन मार्केट ग्रो कर रहा था, फिर मैंने अक्टूबर 2020 में फ्लिपकार्ट पे इसको रजिस्ट्रेशन किया। फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरा सेल इंक्रीज़ हुआ। मुझे देश के हर कोने से ऑर्डर आने लगे। जो मैं लोकल मार्केट में मंथली अर्न करता था, वो मैं वीकली अर्न करने लगा फ्लिपकार्ट के थ्रू। लास्ट मंथ मेरा जो रेवेन्यू था वो 5 लाख प्लस था एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स 3000 थे। फ्लिपकार्ट से जो मेरे बिज़नेस को बूस्टअप मिला है, उसकी वजह से आज मैंने छोटा सा अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी एस्टेब्लिश कर लिया है। और जो मेरी फ्यूचर प्लानिंग है वो ये है कि मैं इसको 1 करोड़ प्लस कर दूँ मंथली। मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट देश के हर कोने और हर घर में पहुँचे, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन एंड ऑर्गेनिक है। छोटे से शहर से भी आप कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं। Thank you. Over the last few years, the Flipkart robust supply chain has played a pivotal role in bringing the sellers, the customers, kiranas, and other stakeholders from Tier 3 cities and beyond to connect with the commerce, thereby establishing a value chain for a seamless movement of the shipments. We have a very strong alternate delivery model that works with kiranas across the country for delivery, with the aim to strengthen the supply chain as well as generate a local employment in the country. We have more than 2 lakh kirana partners in our value chain, with over 30% of the total deliveries today is being done by our kirana partner. Flipkart has sortation centers over 10 million square feet, of storage space in the country. Nearly 30% of Flipkart's 100 million monthly shipments are delivered via kirana partners across the country. In 2022, Flipkart's seasonal job creation during the festive season in last 4 years also hit the milestone of 2.5 lakh jobs, with an additional job of 50,000 in 2022, making it one of the biggest seasonal employment generation in the country, Let me come to the last section of my speech, which is FPOs. E-commerce also has a potential to play a significant role in connecting with the farmer and farmer-produce organizations in the market by leveraging the power of technology. E-commerce can bridge the gap between the small farmers and consumers, reducing the intermediaries and ensuring the fair price for the farmers.
Flipkart has trained over 10,000 farmers on product quality, procurement process, food safety, and other allied segments to enable the market access and empower the farmer community as a part of Samarth Krishi initiative. This program aims to drive the sustainable growth, provide market access linkages, support farmer produce organizations through bulk sourcing of commodities and capacity building initiatives, while also helping to understand the ease of doing business online and inclusive for farmers. It fills me with immense pride to witness Flipkart play a key part in the 5 trillion journey the country has set aside to scale, Today, as a company, our mission is more than just democratizing e-commerce. We focus on deep impact on ground and create a shared value, not only for customers, but also for sellers, local craftsmen, weavers, kiranas, and delivery partners, MSMEs, and large ecosystems, including our planet. It's a great time for India to shine forth as the fastest growing large economy. The initiatives that have been introduced on this platform today are the progress and the development of state, and our country as a whole will play their own significant role in the journey. We at Flipkart feel honored at this path, and we strive to empower every Indian dream by delivering value through innovation in technology and commerce. That brings me to the end of my speech, and once again I would like to express my appreciation to the government of Uttar Pradesh in organizing a summit of such a scale and magnitude. We offer our best support and success for this noble program. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Kapoor. Clearly, e-commerce has revolutionized the way MSMEs reach out to the world. While e-commerce has, of course, a very significant role going forward, the traditional marketing and the retail channels continue to dominate. And as part of that, I would request Mr. Anant Ram, who is the director of Lulu Group, which operates across multiple geographies, to please come here and enlighten us on how traditional retailers can play a big role in the way the traditional industries can approach and reach out to market. Mr. Anant Ram, please. Hats off to the government of Uttar Pradesh for coming up with such an initiative and making sure that the growth path for this is well set. If you could please put up a slide that I had. As you're all aware, we opened our first shopping mall and hypermarket in the beautiful city of Lucknow last year. When we did so, we had the good fortune of having the Honorable Minister being present there, and we launched a special ODOP unit within our hypermarket. It's not here. Sorry about that. In continuation with that, we went ahead and signed an MOU with the government of Uttar Pradesh to promote the products. As you can see, this was a stall that we have set up within our hypermarket. So we have created a section in our hypermarket as a category for the ODOP products. This enables us to showcase the various products that are developed by the artisans in the state of Uttar Pradesh to a wide crowd of people and customers who come to our stores. As I was mentioning, in continuation to this, we signed an MOU with the government of Uttar Pradesh to promote these products across the country. So now we currently have these products not only in Lucknow, we have taken this forward to our other stores in various parts of India as well.
The next step towards this is that we are going to take this furthermore to our presence. We currently operate in about 256 hypermarkets and shopping malls all across in countries like Saudi Arabia, Oman, Kuwait, Qatar, UAE, Egypt, Malaysia, Indonesia, and we have very strong plans for India as well. So we will be taking these products across to all these countries, and we'll be showcasing these products in our stores, which will give an opportunity for global markets to start identifying these products and recognizing them. These are products which generally, normally when people come as tourists from different parts of the world to India, they take back these products as souvenirs. They take back these products as gift items. They also take back these products as fond memories of their hometown. Now, by doing so, by taking this reach to all our stores, we are trying to bring these products closer to the consumers globally. So not only in India, we wish to promote these products globally across all our hypermarkets and supermarkets in the GCC and other parts of the world. We'd like to take this, as you can see, this is something that we do every year. We promote, various cultures regularly. So we have a theme of an event called as India Utsav. India Utsav is something that we do across all our stores, not only in the GCC, but across the world, where we promote all Indian products of various states. And also we try to give a taste of the Indian culture and cuisine to the consumers across the globe. So this year, what we have done is that we have actually put the ODOP products as a special segment. As you can see, we have highlighted authentic products. You can see we have the Kashmiri apples, but we also have the complete range of ODOP products from Uttar Pradesh, which we have taken there and we have displayed in stalls. So this gives an opportunity for the consumers to come, see these products, have a touch and feel of them, experience them firsthand, and also buy them at a very competitive price. We also feel that by doing these sort of initiatives, it'll increase global awareness of such products, amongst the consumers, and will also give a much more better opportunity for these products to be marketed. As my previous panelist, was sharing the beautiful video of Mr. Piyush and his success story, I think these are all ways in which we can support, the small MSME entrepreneurs, encourage them to do their businesses in better manner and give them a global audience. I would like to take this opportunity to thank the Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, who has been true to the, the slogan of our Honorable Prime Minister, which is vocal for local. I think this is something which has been really enforced and enacted in a very right manner, and obviously under the apt guidance of our Honorable Minister for MSME, who's been very active. And I must also like to take this opportunity to say that the government of Uttar Pradesh, the complete set of bureaucrats and the officials have been very, very supportive and very, very proactive in every requirement of ours. So we've really seen them, we have interacted with them during their visits to Dubai and other places. So we've seen how passionate they are about promoting the local MSME products and local produce. We are also one of the largest exporters of foodstuff, fresh produce, fruits, vegetables from India to all our hypermarkets across the globe. So we do have a lot of exports that are happening from Uttar Pradesh. This year, I think there is the special focus on millets, because as we're all aware, millets has been, it's a superfood, and this has been announced as a year for millets. So we'll be focusing more on such products, and we'll look forward to working very closely with the government of Uttar Pradesh and promoting the ODOP products, not only in India, but also in all our stores overseas and abroad. Thank you very much, and have a nice day. Thank you, Mr. Anantram. Clearly, Lulu Group, with its spread
across the world can be a game changer for the local MSMEs. अब मैं आदरणीय श्री राकेश सचान साहब का अब मैं अनुरोध करूंगा यहाँ बैठे उपस्थित सभी लोगों से, अगर आप लोगों के कुछ प्रश्न हो अबाउट ODOP या जो उत्तर प्रदेश सरकार के स्कीम या उसके विजन के बारे में, तो प्लीज़ गो अहेड एंड आस्क. नमस्कार. हेलो 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 हेलो. वॉल्यूम अप. नमस्कार, मेरा नाम अरविंद सिंह है और मैं सिंगापुर डेलीगेशन से आया हुआ हूँ. मेरा प्रश्न ये है कि एक तो नंबर 1 बहुत बेहतरीन आइडिया है, इतनी हमारी जो टैलेंट है उसको निकालना, पर there are 32 million NRIs and OCIs around the world, and they're all could be potential ambassadors, because NRI का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान से ही हैं. तो अगर 32 मिलियन में से प्रोपोर्शनेट के हिसाब से भी हम 20% यूपी से समझें, तो approximately there are 6 million ambassadors of UP who are overseas. I would like to perhaps speak with, have some ideas. I'd like to speak with perhaps the right people here to see how we can engage NRIs and OCIs to be ambassadors of ODOP in not only buying themselves, but promoting it to their friends and families and acquaintances wherever they are. Thank you very much. Hello. Hello everyone. Thank you for organizing such a nice, platform. I'm a chartered accountant by profession. My question to Mr. Anantram and Dheeraj ji. Basically, I am going to start a business into the rice market, which is covered under the ODOP scheme. So, since you are, one is from digital marketing and one is from, face-to-face, I would say, buying and selling. So how can I approach to you? Because you have selected few items only, not only the rice and everything. So could you please guide me or give me some ideas? Because I have went to the Amazon. They are charging a high fees for displaying the product over their platform. Almost all margin get dissolved. So please give some light on the same thing. Thank you so much. We have a two. Hello. Can you hear me? Hello. We have two programs going on. One is under the ODOP, and the second one is the Flipkart Samarth. You can register yourself on a Flipkart Samarth. You can go on the stall in hall number 2. There are people standing there. You can talk to them. They will tell you the way out. There's a marketplace team which can help you to get yourself registered on Flipkart platform. Hello. Well, afternoon, everyone. Afternoon, everyone. My name is. Just a moment. I think I'll just answer him on the brick and mortar store format. Well, we are present right here in Lucknow. So we have our mall, we have our office here. You're most welcome to contact our buying department
which is currently based out of our office here in Lucknow itself. And my colleagues would be happy to share the details to you. Thank you. He's there right in front of you, Mr. Jai Kumar. He's our regional director for UP. और क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ जी। राकेश जी, ODOP का जो ये आपका प्रोडक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये ज़्यादातर आपने ग्रामीण आंचल से जोड़ा। तो ग्रामीण आंचल से जोड़ने के साथ साथ जैसे ONDC ने एक अपनी प्रेजेंटेशन मेरठ में दी थी और इतने शाब्दिक शब्दों में हिंदी में और इंग्लिश में इन लोगों ने समझाया था। तो यदि ODOP की परिभाषा हम जैसे ग्रामीण लोगों को फ्लिपकार्ट, अमेज़न लोग ऐसे समझा दें कि हम इसको ऑनलाइन कैसे बेचें, क्योंकि हम लोगों पे सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब हम इसको ऑनलाइन बेचने की कोशिश करते हैं तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी संस्थाएं ONDC के प्लेटफॉर्म से जुड़ के हम लोगों को नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे सकती हैं। जैसे आपने यूपी ग्लोबल 2023 सबमिट करके हम लोगों को यहाँ पे बुलाया है। ये मेरा पिछले 5-6 सालों का अनुभव है और मैं 2 प्रोजेक्ट लेके आपके साथ, एक 400 करोड़ का, एक 600 करोड़ का लेके आया हूँ। MOU हो चुका है। तो मैं दोनों प्रोजेक्टों को, एक रोड ब्यूटिफिकेशन का जो हाईवे, नेशनल हाईवे आप बना रहे हैं, और एक पूजा की किट का, दोनों प्रोजेक्टों को मैं बिल्कुल अमेज़न की आपके सहयोग से धरती पे अच्छे से उतार लेंगे हम उसको। तो हमें बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए आपका ONDC की तरह। As I mentioned earlier, that you can go to our stall number 2, and there is a Flipkart and ODOP, pavilion. Please go and visit some of the executives there. They can help you to onboard your organization on the platform. They can do it. Even the Amazon is there, as well as Flipkart is also there. Yeah. Afternoon, everyone. Hello. आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ रजत। सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो जो यूपी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था ये ODOP में, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट आया और उसकी पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट आया। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इससे प्रोडक्ट के रेट्स कितने इंक्रीज़ हुए हैं। जैसे पहले अगर वो 100 रुपीज़ का बिकता था, उसमें कितने % का इंक्रीमेंट आया बिकॉज ऑफ दिस इम्प्रूवमेंट इन पैकेजिंग एंड डिज़ाइनिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, आप लोगों ने बोला कि जो पहले 88,000 करोड़ का पोर्टफोलियो था, अब वो 1,50,000 का पोर्टफोलियो हो गया है, 1,50,000 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया है। तो सर उसमें एवरेज टिकट साइज़ क्या होता है प्रोडक्ट का, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स का क्या इंक्रीमेंट रहा है। द अमाउंट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 88,000 करोड़ टू 1,50,000 करोड़। तो सर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है और उसका एवरेज टिकट साइज़ क्या है प्रोडक्ट का, एक एवरेज प्राइस क्या होता है ODOP जो 62 प्रोडक्ट्स हैं उसका। थैंक यू। देखिए ऐसा है कि थोड़ी मेरी आवाज़ गड़बड़ है, गला बैठा हुआ है। तो जो प्रोडक्ट है, जब उसका डिज़ाइन बढ़िया होता है, क्वालिटी इम्प्रूव होती है, तो उसका जो प्राइस रियलाइजेशन है वो भी बेटर होता है। और वही हो रहा है इस समय। जो आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स का दाम बढ़ा, ये डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी में यूनिफॉर्मिटी और बेटर मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के कारण हो रहा है।
तो इससे न केवल हमारे आर्टिजन्स का फ़ायदा हो रहा है, बल्कि जो हमारी कलाएं लुप्त होने की ओर थीं और जो यंगर जनरेशन इसको करना नहीं चाहता था, वो भी आगे आ रहा है। अब आप अभी अगर जाएंगे हमारे पेविलियन में, जो ODOP का पेविलियन है, वहाँ आप देखेंगे एक लड़की है जो एक बुनकर परिवार से है और उसने निफ्ट से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हैंडलूम में PhD कर रही है और खुद वो अभी आपको बनारसी साड़ी काढ़ करके दिखला रही है। तो जो यंगर जनरेशन है उसका अट्रैक्शन तभी इधर आएगा जब इसकी मार्केटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो प्राइस रियलाइजेशन बेटर हो रहा है और इससे लोगों में एक उत्साह की फीलिंग आ रही है। थैंक यू सर। My name is Vineet Nahata. I'm the chair. Check. अब मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय श्री राकेश सचान साहब का, जो हमारे मंत्री हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो अभी उपलब्धि हमने देखी है वो उन्हीं के डायरेक्शंस के वजह से है। अब मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि वो आएं और हमें आगे के लिए प्रोत्साहन करें। आज हमारे ODOP के इस सेशन में उपस्थित हमारे बीच में चीफ गेस्ट जो स्मृति ईरानी जी हैं, वो कैंपस में आ चुकी हैं, अभी शीघ्र ही मंच में आने वाली हैं। चूँकि इसके बाद भी नितिन गडकरी जी का भी इसमें सेशन है। हमारे बहुत सारे यहाँ जो मंच में उपस्थित हैं, हमारे सहयोगी साथी मंत्री हैं, अनिल राजभर जी जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, हमारे रविंद्र जायसवाल साहब जो स्टैम्प के हमारे सहयोगी मंत्री हैं, और हमारे बीच में हमारे विभाग के जो एसीएस हैं अमित मोहन जी और मयूर महेश्वरी जी, प्रंजल जी, हमारे बीच में थम्मी कोसी जी, धीरज कपूर जी, एवी अनथाम जी, हमारे बीच में शोभित माथुर जी, और बहुत सारे यहाँ पर बैठे जो निवेशक हैं इस हाल में, सभी और विभागीय अधिकारियों का मैं सभी का अपनी ओर से इस इन्वेस्टर समिट में आप आए, आपका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो ये निवेश प्रदेश के रूप में बन करके उभरा है, जिसमें कि जब इन्वेस्टरों को लाने के लिए जब एक रचना हुई कि इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में होनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने जब विजन रखा, 3 महीने पहले, तो सारे मंत्रियों को मंत्रिमंडल में बैठक करके 9 ग्रुप बना दिए, 19 देशों में जाने के लिए, जिसमें हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी, सारे मंत्री लोग वहां जा कर के जब 5 दिन 6 दिन उन शहरों में रोड शो करके आए, और जो एक विजन था कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमको लक्ष्य रखा था सरकार ने,
और जब आने के बाद समीक्षा बैठक हुई तो 7 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारा आ चुका था। तब मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि हमें इस लक्ष्य को बढ़ाना है और 17 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य हमारे बीच में इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे भारत सरकार की केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी आ चुकी हैं। मैं उनका अपनी सरकार की ओर से, मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। बोल मैं वो कर दूं स्वागत क्यों? आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में निवेशकों का उत्साह और जोश बढ़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमयू और प्रस्ताव आए हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में निवेश की इच्छा जताई है, मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ती हुई कानून व्यवस्था और आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा, जिस तरह से एयर कनेक्टिविटी के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, चाहे जेवर का हवाई अड्डा हो, चाहे अयोध्या का हवाई अड्डा हो या एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे से लेकर के जो हमारे जितने भी एक्सप्रेसवे बन करके तैयार हैं, डेडिकेटेड कॉरिडोर में जिस तरह से रेल का सीधे से जुड़ाव, उत्तर प्रदेश से सीधे समुद्र तटों का जुड़ाव हुआ है, तो उससे लगातार हमारे उद्यमियों का इधर रुझान बढ़ा है और वही का कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के क्षेत्र में भी जो सरकार ने 50 करोड़ से बढ़ा के 250 करोड़ किया और जिससे कि आज पूरे प्रदेश में एमएसएमई के विस्तार में बहुत व्यापक क्षेत्र बढ़ा है। यह बृहत स्तर पर रोजगार सृजित करता है, हर वर्ग समाज को रोजगार में आगे बढ़ने का अवसर भी देता है। ओडीओपी की जो आज ये सेशन है, ओडीओपी में अभी विजन जिस तरीके से ओडीओपी की 2018 में उत्तर प्रदेश ने शुरुआत की और आज पूरे देश और दुनिया में ओडीओपी की पहचान उत्तर प्रदेश के द्वारा हुई है। इसमें हम ओडीओपी को बढ़ाने के लिए तमाम तरीके की रोजगार परक की योजनाएं भी चला रहे हैं, जिसमें ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, ये हमारी प्रमुख योजनाएं हैं, जिसमें हम लोग एक जनपद एक उत्पाद की महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने का एक अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश उभर करके इस देश में आया है। इस योजना में जो 75 जिले हैं, उन 75 जिलों के जो हमारे उत्पाद थे, जिनको विकसित करने के लिए तमाम योजनाएं और कार्यक्रम लागू किए और उन्हीं की पहचान के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने पहचान के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद को एक बृहद तरीके से प्रमोट करने का काम किया है। आज ओडीओपी में उद्यमियों को न केवल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, बल्कि प्रशिक्षण टूल किट योजना के माध्यम से स्किल को अपग्रेड करते हुए आधुनिक तकनीक का टूल किट भी हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। ओडीओपी को प्रमोट करने के लिए सीएफसी जो सामान्य सुविधा के केंद्र हैं, 75 जिलों में अब तक हम लोग 25 जनपदों में सीएफसी स्थापित कर चुके हैं, जिसमें 15 करोड़ की इस योजना में
15 करोड़ की इस योजना में हम लोग 90% की छूट हम लोग दे करके, इसलिए कि अगर एक सीएफसी केंद्र कहीं बनेगा तो उससे हमारे तमाम छोटे छोटे उत्पादों को प्रोत्साहन मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसी के लिए ओडीओपी उत्पाद की ब्रांडिंग के लिए अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के साथ साथ विशेषज्ञ संस्थाओं से जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट पैकेजिंग आदि, मार्केटिंग के फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जो हमारे तमाम साथियों ने अपनी बात रखी है, ई कॉमर्स से इसको हम कैसे आगे बढ़ावें, इसके लिए भी हम लोगों ने पूरी तरीके से प्रयास किया है। और आज इसी का नतीजा है कि 80,000 करोड़ से जो इसका निर्यात था बढ़ करके लगभग 1,60,000 करोड़ का निर्यात पहुंचा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मंत्री जी काफ़ी विलंब से आई हैं और अभी एक सत्र भी है हमारे विभाग के द्वारा, प्रेजेंटेशन में भी तमाम बातें रख दी गई है। आज ओडीओपी की ब्रांडिंग जब स्वयं प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, आज अगर कहीं भी प्रधानमंत्री जी दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष रहता है, उसको अगर वो गिफ्ट में कहीं कुछ देते हैं तो ओडीओपी का भी प्रोडक्ट उसको देते हैं। अगर हमारे हस्तशिल्पी छोटे कारीगर के द्वारा बनाया गया ओडीओपी उत्पाद वो उनके ड्राइंग रूम में जा कर के सजता है, तो ये जब प्रधानमंत्री जी लगातार, चाहे मुख्यमंत्री जी हो और सब जगह से आज ओडीओपी की जो जिस तरीके से भारत सरकार ने भी पूरे रिटेल शॉप 1 डिस्ट्रिक्ट में बनाने का जो हरी झंडी दी है, तो निश्चित तौर पर हमने इसको आगे बढ़ाने में हमारी सरकार ने निरंतर प्रयत्न किया है और आगे करती रहेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ हम आए हुए जितने भी हमारे यहाँ पर उद्यमी हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इन्वेस्टर समिट में भाग लेने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं राकेश जी, माननीय मंत्री राकेश जी से अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ थोड़ा आगे रहें और हमारी ऑनरेबल चीफ गेस्ट को बुके के साथ संबोधित करें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जितना एक्साइटमेंट आप सभी को मैम को देख के है, तालियों के साथ उसको आप लोग प्लीज़ दर्शाएं। वी हैव नन अदर देन Srimati Smriti Irani, Honorable Minister of Women and Child Development, Government of India. Ladies and gentlemen, as we all know, she has taken number of steps to empower women, including launching the Beti Bachao Beti Padhao campaign to promote the education and welfare of girl child. इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता कि हमारे ओडीओपी के सेगमेंट में मैम यहाँ पे प्रेजेंट है हम सभी के साथ। वंस अगेन लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मैम। और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं हमारे लॉन्च की तरफ, जिसके लिए मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी हमारे मॉडरेटर को। सर, ओवर टू यू। It's indeed a pleasure to have none other than Honorable Srimati Smriti Irani ji. I would request her to please come ahead and launch two significant books under the program. One is a compendium of ODOP success stories and also a catalog of all the ODOP products.
Ma'am, your focus on women empowerment and especially the financial and the economic independence of women is clearly a vision that ODOP can play a big role on. I would request ma'am to come here and give us the vision how ODOP especially can look at women and entrepreneurship and go and create another benchmark there. Ma'am, over to you. मंच पर विराजमान आदरणीय राकेश जी, आदरणीय कपिल जी, distinguished delegates, ladies and gentlemen. सर्वप्रथम तो मैं विलंब के लिए क्षमा चाहती हूँ, but I think as most women we made it on time. Just before I was to speak, I ensured that the last speaker got adequate opportunity to engage with the delegates gathered here today. It is only Uttar Pradesh that can manage multiple international events. I had the greatest privilege of beginning G20 deliberations on women's issue today in Agra. और ये उत्तर प्रदेश के प्रशासन की खासियत है कि एक तरफ ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर्स आज इस इन्वेस्टमेंट समिट में विद्यमान हैं प्रदेश की राजधानी में, और दूसरी ओर वो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला और जेंडर जस्टिस के ऊपर न सिर्फ टिप्पणी करते हैं, न सिर्फ विशेषज्ञ हैं, बल्कि पॉलिसी भी निर्धारित करते हैं, ऐसे G20 समुदाय के सभी विशिष्ट अतिथि आज इसी क्षण आगरा में हिंदुस्तान की उपलब्धियों से कुछ सीख रहे हैं. And this whole process of learning, this whole process of debate, deliberation and discussion is the very foundation on which we are building a new India. एक प्रशासन की दृष्टि से अनुभवी महिला कभी भी इस प्रकार के समिट में वार्ता के अंतर्गत कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती जिससे प्रदेश को लाभ हो. मेरे पास डुअल जिम्मेदारी है, एक भारत सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री के साथ साथ अल्पसंख्यक मंत्री होने का, और दूसरा मेरा गौरव कि मैं उत्तर प्रदेश से सांसद हूं. अमेठी मेरी लोकसभा क्षेत्र है. और आज जब ODOP टीम से मेरी चर्चा हुई तो मैंने ODOP टीम से कहा कि मैं जानती हूं कि इन्वेस्टमेंट समिट में अब तक लगभग 32 लाख करोड़ रुपए का MOU हुआ है. हम अमेठी के नागरिक आपका आभार व्यक्त करते हैं कि 7,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट मात्र एक क्षेत्र में आने का संकल्प हमने प्राप्त किया है. What does ODOP denote? For some it may be a medium of commerce. For many it is a medium of enterprise. For those who are in the world of skill, it is a medium for engaging talent. But if you ask a citizen, how would you look at ODOP as a governance agenda? It is an agenda that helps percolate the benefits of commerce to the last mile. इसलिए आज अपने आप में अनोखा दिन इसलिए भी है कि आप पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की दृष्टि से अगर देखें तो आज का दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को समर्पित है. और उनका चिंतन ये था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति वो विकास का लाभ ना प्राप्त करे, तब तक विकास का हमारा संकल्प पूरा नहीं होता है. और मेरी दृष्टिकोण से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ये पूरा प्रयास लास्ट माइल में लास्ट स्टैंडिंग सिटीजन तक पहुंचने का एक सराहनीय प्रकल्प है. Now, if you look at the distinguished delegates who are gathered on the stage, I had the distinction of handing 2 publications to 2 gentlemen, one from the Lulu Group and the other from Flipkart.
Before Mantri ji could begin a conversation, I asked the Lulu group, आप उत्तर प्रदेश का सामान जीसीसी कंट्रीज में कितने स्टोर फ्रंट्स पर लेकर जाएंगे? उन्होंने आश्वस्त किया है कि 200 से ज़्यादा स्टोर फ्रंट्स पर उत्तर प्रदेश के ये प्रोडक्ट्स जो उत्तर प्रदेश के कारीगर बनाते हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ प्रदर्शन की दृष्टि से बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से समर्थन प्राप्त होगा। दूसरा, धीरज जी फ्लिपकार्ट से हैं। मैंने कहा इफ़ समबडी हैज़ टू एंगेज ऑन कॉमर्स, तो मोटा मोटी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति आपसे ये पूछेगा कि बताइए साहब, आपका प्लेटफॉर्म इतना बड़ा है, उस प्लेटफॉर्म में हमारे प्रदेश से संबंधित कारीगर का आप कितना सामान बिकवा सकते हैं ताकि उसको लाभ हो। मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने धीरज जी 1600 करोड़ रुपए की ODOP संबंधित प्रोडक्ट्स को अपने प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर उसका लाभ सीधा कारीगर तक पहुँचे, ये सूचना आज हमें उपलब्ध कराई है। अगर आप ODOP के इस प्रयास के पीछे जो सूक्ष्म रूप से काम होता है उसको देखें तो निश्चित रूप से ये एक लंबे अंतराल का प्रयास नहीं है। शायद 2018 से ये संकल्प शुरू हुआ और हम फरवरी 2023 में हैं और इन चंद वर्षों की यात्रा में 80,000 से ज़्यादा लोगों को सिर्फ इस एक छंद में ट्रेन करना अपने आप में ODOP की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करती हूँ। Because when you look at skill from the perspective of one district, one product, these are not unskilled workers. These are workers who already have talent, and many of that talent is legacy talent. What that legacy needs to do is to meet modern commerce. And that is what the training of one district, one product has done. That across the state of Uttar Pradesh, there are many legacy karigars who are available today, be it Banaras, be it Agra, or for that matter, if you ask anybody in Lucknow, they will talk about chicken curry. I see one of the persons who has helped many self-help groups understand the very ethos of design and modern commerce. Shipraji is sitting right there in the front row. So the fact that every arm of governance is dedicated to enhancing skills which are legacy skills is one of the biggest achievements of ODOP. Because what you do is not only to commercialize that legacy, but you also help preserve that legacy so that it is economically beneficial for future generations. My other compliment, उत्तर प्रदेश में हमारे पूरे देश की सबसे ज़्यादा MSME स्थापित हुई हैं, 90 लाख से ज़्यादा, और 90 लाख से ज़्यादा इन MSMEs में 70% MSMEs ODOP के कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अगर कोई इस भ्रम में है कि ये सीरियस कॉमर्स नहीं है, तो शायद उन्होंने मोदी सरकार ने MSME की ग्रोथ को कैसे फ्यूल किया है, इस बात से वो भली भांति परिचित नहीं है। इसलिए आज मैं दो चीज़ें विशेष यहाँ पर MSME की दृष्टि से उल्लेख करना चाहती हूँ। हमारे देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 साल बाद MSME को रीडिफाइन किया है। माइक्रो एंटरप्राइज तो छोड़ें, अगर आप मीडियम यूनिट्स को भी देखें तो अब डेफिनेशन ये है कि अगर 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ का टर्नओवर है तो वो आपके लिए मीडियम यूनिट है। मेरी अभिलाषा है और निश्चित रूप से सेक्रेटरी MSME और एक्सपोर्ट प्रमोशन इसको करेंगे कि हर MSME को अब उस रीडिफाइंड पर्सपेक्टिव में क्रेडिट, और वो भी कोलैटरल फ्री क्रेडिट, किस प्रकार से मिल सकता है। अगर स्किलिंग में उसको भी आप समाहित करेंगे तो कमर्शियल मैनेजमेंट की दृष्टि से ODOP में और आप इजाफा देखेंगे। The other aspect is those skill partners, and I'm appreciative of the fact that the state of Uttar Pradesh now has over 6 international agencies that are partnering with this one particular venture.
My other request to those who are, and I'm saying this as a request because I know Amethi has Munj as one of the ODOP products. So this will benefit my people as much as it will benefit people across the state. The other issue which I think, when I look at Flipkart, when I look at Lulu malls, we recognize the export potential of the small enterprise. So today, those who have joined us in supporting the ODOP venture of the state of Uttar Pradesh, we also would appreciate if that small entrepreneur is taught what are those prerequisites that are needed in terms of compliance nationwide, country by country, market by market, from the perspective of export promotion of ODOP products. That is a very well-honed technical area of engagement, and I'm sure that the government of Uttar Pradesh will find that kind of an engagement. When I was introduced, the gentleman was kind enough to say that मैं महिलाओं के लिए सिर्फ काम करती हूँ. Now, to work for women is the best work to be done, because every policy that has women at the center, every decision that has women at the center, every step that has women at the center, and every program that has women at the center has helped accrue benefits for the entire family and society at large. So if you're a smart investor, invest in women. And why do I say this? Prime Minister Modi began the Mudra Yojana. It was not a gendered financial services. प्रधानमंत्री मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि महिलाओं के लिए एक कोलैटरल फ्री लोन शुरू कर रहे हैं. उन्होंने मुद्रा योजना की जब शुरुआत की तब कहा कि जो भी छोटा व्यापारी है, छोटा व्यवसाय करता है, वो आए, बैंक में अपने दस्तावेज दे, बैंक की एस्टैब्लिशमेंट उन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद ये निर्णय लेगी कि आपका बिजनेस प्लान साउंड है या नहीं है. ये हिंदुस्तान में ही संभव था कि एक साधारण गरीब परिवार की महिला, ग्रामीण अंचल की महिला इस एक स्कीम के अंतर्गत अपने लिए एक साधारण सा नहीं बल्कि असाधारण बिजनेस प्लान खुद बनाती है, अपनी बैंक के ब्रांच में जाती है, बैंक के मैनेजर को कन्विंस करते हैं कि ये लोन का डिसीजन विल बी अ गुड डिसीजन, लोन प्राप्त करती है, उस लोन को सर्विस करती है, अपने व्यवसाय को बढ़ाती है, लोन पे बैक करती है, एंड द एनपीए फॉर फीमेल ओन्ड बिजनेसेस इज लेस देन 2%. So if there are any investors gathered here today, please ask the ministry concerned who are the female entrepreneurs in the ODOP universe. You invest in them specially, and if you are international investors, you will have money for diversity hirings and for diversity-based investments. And that is why I hope that if there are any funds to be invested in such enterprises, we will benefit not only one enterprise, but that village, that town, and the entire society the woman is a part of. And lastly, I have many an asks. Normally ministers come with something to give. लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसा कि मयूर जी ने कहा 32 लाख करोड़ का MOU का आ चुका है आपके पास प्रॉमिस, कुछ राष्ट्रों के GDP से ज़्यादा है. But if there's one more ambition that I can leave on this floor, that ambition is, क्या हम मात्र इस बात से संतोष करें कि ODOP का मतलब MSME? क्या हम मात्र इस बात से संतोष करें कि ODOP का मतलब सिर्फ माइक्रो एंटरप्राइज? क्या मात्र इस बात से हम संतोष करें कि ODOP का मतलब महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की? If we want to go to the precipice of a revolution, we need to identify those micro units, those medium-scale units that have the potential to become mid-sized companies. And if you can do that identification, and if your skilled partners can align themselves to such enterprises, ODOP will begin a financial revolution from a business point of view that has never been seen in our country. जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये हमारा सौभाग्य है
कि अमृतकाल में पहला संयुक्त सदन को जिन्होंने संबोधित किया वो हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी आदिवासी परिवार से हैं। अमृतकाल का प्रथम बजट जिस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया सदन में वो भी एक महिला है। और अमृतकाल की जो कल्पना है कि हर व्यक्ति के हाथ को काम मिले, हर परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो, उसकी पूरी की पूरी धरा, उसकी नींव ओडीओपी में प्रतिबिंबित होती है। अगर आप सशक्त ओडीओपी का कार्यक्रम चलाते हैं तो सशक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत बनाते हैं। आज इस संकल्प के साथ यहाँ पर आए सभी इन्वेस्टर्स को, स्किल पार्टनर्स को बहुत बहुत अभिनंदन और उत्तर प्रदेश सरकार को अमेठी की सांसद के नाते बहुत बहुत आभार। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for your enlightening words. Clearly, huge potential to make those champions coming from the rural background. अब मैं आदरणीय श्री राकेश सचान साहब से अनुरोध करूंगा कि वह मैम को एक ओडीओपी प्रोडक्ट जो कि फिरोज़ाबाद का ओडीओपी प्रोडक्ट है वह दे के सम्मानित करें। अब मैं श्री प्रांजल यादव आईएएस सेक्रेटरी एमएसएमई एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन से अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। ऑनरेबल मिनिस्टर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मैम श्री स्मृति ईरानी जी, ऑनरेबल मिनिस्टर एमएसएमई स्टेट ऑफ यूपी श्री राकेश सचान जी, एसीएस एमएसएमई श्री अमित मोहन प्रसाद जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री कपिल देव अग्रवाल साहब, कमिश्नर एंड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एमएसएमई श्री मयूर महेश्वरी जी और श्री धीरज कपूर जी, श्री एवी अनंतराम साहब, मिस्टर शोभित माथुर, मिस्टर थॉमसी कोशी, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं कि आज इस ओडीओपी सेशन में आप सब लोग आए, आपने हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। बहुत सारे इश्यूज़ इस एम्बिशियस स्कीम के जो 2018 में यहाँ शुरू हुई, बहुत सारे आर्टिजन्स हर ज़िले से, उत्तर प्रदेश से, बहुत सारा इसमें अब मार्केटिंग, कॉमर्स, प्रोडक्शन सब पे बहुत अब ध्यान दिया जा रहा है। सभी जो हमारे गेस्ट्स हैं उनको ओडीओपी जो गिफ्ट्स हैं वो दी जा रही हैं और ओवरऑल अब आप देख रहे हैं कि जो ये स्कीम थी ओडीओपी जो स्टार्ट हुई यूपी से अब ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड हो रही है और अब इंटरनेशनली भी बहुत सारे कंट्रीज़ इस स्कीम को अडॉप्ट कर रहे हैं। और लास्ट में मैं हमारे जो गेस्ट्स आए हैं, जो ऑडियंस में हैं, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। ऐसे ही होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे रिक्वेस्ट है कि जरा प्लीज वॉल्यूम अप क्लियर कर दीजिए, रास्ता क्लियर कर दीजिए। दोस्तों सभी से निवेदन है, वॉल्यूम अप। सभी से रिक्वेस्ट है कि हॉल में बिल्कुल भी किसी प्रकार का केओस ना क्रिएट हो। इस चीज़ में जितने भी गेस्ट हैं सभी लोग कोऑपरेट करें और इसी के साथ साथ प्लीज़ धीरे धीरे थोड़ा सा बाहर निकल जाएं हॉल से। और इसी के साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो अगला सेशन है उसकी शुरुआत होगी कुछ देर में, लेकिन तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम जो सेंटर एरिया है या फिर जो साइड एरिया है इसको प्लीज़ खाली कर दें फॉर आवर ऑनरेबल मिनिस्टर टू लीव द हॉल स्मूथली।
जरा रिक्वेस्ट ये है कि जो नेक्स्ट सेशन में नहीं है वो बाहर चले जाएं। जी हाँ, प्लीज वेकेट द हॉल। जो नेक्स्ट सेशन फरवरी 2023 के बीच लखनऊ में किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय इन्वेस्टर्स समिट सामूहिक रूप से व्यापार के अवसरों का पता लगाने और साझेदारी बनाने के लिए दुनिया भर के नीति निर्माताओं, कॉर्पोरेट नेताओं, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों, शिक्षाविदों, थिंक टैंकों और राजनीतिक और सरकारी नेतृत्व को एक साथ लाने का विशेष प्रयास है। हमारे देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस निवेश शिखर सम्मेलन के माध्यम से निवेशक समुदाय के बीच उत्तर प्रदेश को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का ये प्रयास राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देगा। इस वर्ष इसमें 20 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों की भागीदारी की उम्मीद की जा रही है। साथ ही सरकार ने इसमें 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 उत्तर प्रदेश को हर तरह से और सशक्त बनाए जाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार, एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार, एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार। 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। मकान बनाते समय लापरवाही भूकंप में महंगी पड़ सकती है। भूकंप से ईंट या पत्थर की चुनाई वाले मकान में दरारें न आए, इसलिए आप लिंटल और प्लिंथ लेवल पर और जोन 5 के मकान में सिल लेवल पर भी भूकंप पट्टियां लगवाएं। हर कोने और जोड़ पर खड़े सरिये लगवाएं। घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित। आपके हित में तत्पर NDMA। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर NDMA। अलमारी और बुक शेल्फ को दीवार में फिक्स करो। भारी सामान निचले शेल्फ में रखो। मिरर और भारी फर्नीचर बेड से दूर रखो। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार,
एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। उत्तर प्रदेश पूर्वी भारत का ही नहीं बल्कि पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। नए भारत का ग्रोथ इंजन आपके निवेश को देगा दोगुनी रफ्तार। एक्सप्रेसवे का विशाल नेटवर्क और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी, अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, साथ ही सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, 25 निवेश फ्रेंडली नीतियां बनेंगी सफल व्यापार का आधार। आइए नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में निवेश करें, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में सहभागी बने। नमस्कार, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप सभी का स्वागत है। और अब लगातार सत्र का आयोजन चल रहा है। कई बड़े केंद्रीय मंत्री सत्र आयोजित कर रहे हैं और मकसद यही है कि निवेशक जो आए हैं उनको समझाया जाए, सरकार की नीतियों के बारे में बताया जाए। अभी ODOP को लेकर यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर एक बड़े सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान मौजूद थे। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। और ODOP को लेकर उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। जब हम ODOP की बात करते हैं यानी कि एक जिला एक उत्पाद की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वो कुछ ना कुछ खासियत रखते हैं, अपनी पहचान रखते हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP की शुरुआत की थी ताकि हर जिले को एक पहचान मिल सके और उस जिले से जुड़े जो लोग हैं, जो स्थानीय कारीगर हैं, जो स्थानीय बुनकर हैं, जो समाज SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, उनको रोजगार मिल सके। और इसीलिए ODOP लगातार बढ़ता जा रहा है। हम जब ODOP की बात करते हैं तो बजट में भी ODOP का जिक्र किया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भी एक जिला एक उत्पाद का जिक्र किया था, क्योंकि ये हर जिले को अपनी एक पहचान देता है, एक ब्रांडिंग देता है। हम चाहे अलीगढ़ की पीतल की बात करें, फतेहपुर के केले की बात करें, प्रतापगढ़ के आंवले की बात करें या प्रयागराज के अमरूद की बात करें, हर जिला अपने आप में एक पहचान रखता है और बस उस पहचान को एक ब्रांड देना है। और इसीलिए इस बार निवेशक सम्मेलन में लगभग 7,000 करोड़ ODOP पर निवेश किया गया, यानी कि ODOP को और विस्तार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि 7,000 करोड़ ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद को लेकर जो उद्योगपति हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने निवेश किया। यानी कि अब आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, सभी जिलों को जो ODOP है, एक जिला एक उत्पाद है, उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से जुड़ी कुछ और बड़ी बातों पर एक बार फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। 18,643 MOU पर विभिन्न कंपनियों के साथ समझौते हुए हैं। ये 3 दिन का जो मेगा इवेंट चल रहा है,